my academy, which is Dr. Ram Theory Financial Academy, and it is under my company, which is Fitlight Global Trainings Academy Private Limited, which is registered here in India. And as a treatment, आप सब लोग go to this our website trrtfa.com, where you will get some more information about all these things. Let me give you a brief introduction first. Why the need of this academy? क्या है कि Indian market में basically I have two other offices, one in Norway and one in UK, and I trade the US markets and UK markets. But once I landed here in India, a year back, what I observed here, there is a huge disparity between the investing and the trading firm. 90% of the people are losing money. So there must be a reason. And the reason should be very basic. It's not going to be very difficult, which people can't understand. तो अभी क्या है, एक concept है which is called the inversion narrative. What it is? इस दुनिया में दो टाइप के लोग, एक smart एक dumb, और दो टाइप का पैसा है, smart money and the dumb money. अभी the usual question is कि smart लोग कौन है और smart money क्या है? Smart लोग कौन है? Big guys. HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, right? They have the smart money. And who are the dumb people and the dumb money? All the retail investors, 90%. So, जितना भी जो भी सेटअप है, जो आप टीवी पे देखते हो, अभी इंडिया में क्या है? 10,000 ट्रेडिंग सर्विसेज, 10,000 रिकमेंडेशन देने वाले हैं, लाखों की संख्या में लोग बोलते हैं कि उनके पास कोई सॉफ्टवेयर है जिससे पैसा बनना लगेगा, और उससे भी ज्यादा लोग बोलते हैं कि उनके पास कोई सीक्रेट मेथड है जिससे पैसा बनना लगेगा. बट ये सब क्या है? इन्वर्जन नैरेटिव का पार्ट है. फाइनेंशियल इंडस्ट्री वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल. दो स्मार्ट पीपल, दे डोंट वांट यू गाइस टू मेक मनी इन अ नटशेल. दैट्स व्हाई ऑल द सिस्टम्स व्हिच यू सी हियर, recommendation tapes on TV, some gurus come and buy and sell this, but they never do it by their own, right? So there would be a difference. जो लोग इन चीजों को समझ लेंगे, this inversion narrative, at least एकदम नहीं कि वो स्मार्ट बन जाएंगे, but at least वो dumb population से निकल के स्मार्ट की तरफ चलने लगेंगे. At least they understand. Maybe they don't understand what to do, but at least they understand what not to do. That's more important. So that is the context, and later on we'll see all those things here. So this training is just for the educational and the awareness purpose only. आपकी education और awareness के लिए है. इसमें जो भी examples I'll show, it is just for the illustration. It's not a recommendation of any kind. Structure इस सेमिनार में है कि हम देखेंगे what is Indian stock market. इस market की hard realities क्या है? What are the hard realities? इस market में कौन-कौन से tools हैं which can make you money? एक person की, as a, we are all human beings, what we needs and desires, हमें क्या चाहिए life में? कौन-कौन से instruments हैं जो आप trade कर सकते हैं? और most important चीज़ है आपको इस market की dynamics समझना बहुत जरूरी है कि क्या dynamics है इस market. Different trading styles हैं और एक common trader और investor को क्या skill set होना चाहिए जिससे he or she can make money. इस academy का जो purpose है, that is to make you independent. आप खुद से अपने decision लो, because money is yours. आप अपनी मनी किसी को दे दोगे और उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो मैनेज करे, it's not possible. आपका जो पैसा है आपने मेहनत से कमाया है. जब आपने उस मेहनत से पैसे को कमाया है, तो थोड़ी सी मेहनत आप उस पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए खुद पे नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स करना चाहिए. आपको इस मार्केट में आने के पहले सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो करना है वो अपने ऊपर करना है. उसके बाद मार्केट से अर्निंग्स एक्सपेक्ट करनी है. लेकिन लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऐसे ही पैसे बनने लगेंगे, डबल ट्रिपल इनकम हो जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब यही कर रहे होते. दैट्स नॉट द केस. मेरा इंडिया में इसको इस एकेडमी को फॉर्म करने का मेन उद्देश्य लगभग जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अवेयरनेस
about the trading and investing हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन एंड मेंटर किया जा सके, and basically help for a common man to achieve its goal. Make that fan of this one. And I will try my best to actually teach the qualities and the skill sets which a person needs to make money in the market consistently. And I'm also looking for 20 professional traders who work under my group and who just trade simply what I told them to do. So I need 20 more people for my own group here in India. And we have a larger mission, okay, which is to mentor and educate at least 1 million people in India. And for our academy members, they have a lifetime mentorship. Mentorship in the sense, I'm not gonna give you any tips or recommendation or advice. Mentorship in the sense, I'll try to make you independent, and if you stuck somewhere after you get first there, then you can have an expert opinion what you should do, whether you're gonna exit or you should book your losses. स्टॉक मार्केट में 4 रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा, या बिग प्रॉफिट होगा, या स्मॉल लॉस होगा, या बिग लॉस होगा. 3 ऊपर की चीजें इट्स ओके हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट है, बिग प्रॉफिट है, स्मॉल लॉस, इट्स वेरी फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस. बट बिग लॉस, दैट इज यू डोंट नीड इन एनी सेंस. बिग लॉसेस कभी नहीं होने चाहिए. अब वो बिग लॉसेस ही मेन कारण होते हैं ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के अपना पूरा अकाउंट लो ना करने के लिए. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. एक ही बात है, आप 10 ट्रेड में प्रॉफिट करोगे, ठीक है, बट इवेंचुअली सिर्फ आपको एक ट्रेड चाहिए टू ब्लो अप योर होल अकाउंट, जस्ट वन ट्रेड. आई मेट ऑल द ग्रेट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड एंड आई टेल यू अबाउट देम व्हाट दे डू एक्चुअली. एंड स्टॉक मार्केट ये बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है. आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप प्रोफेसर हो, आप एक किसान हो, ऑल आर इक्वल. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का यहाँ कोई यूज नहीं. इफ यू थिंक, एंड यू नो द बिगेस्ट लूजर्स आर दोस पीपल हु थिंक दे आर सक्सेसफुल इन देयर फील्ड एंड सो दे कैन बी सक्सेसफुल हियर. नो, नॉट अ चांस. यहाँ पे सक्सेसफुल सिर्फ वही लोग होंगे जो इस मार्केट को अच्छे ढंग से समझेंगे, इसको रिस्पेक्ट देंगे और एक रियलिस्टिक रिटर्न लेने की कोशिश करेंगे. मार्केट के ऊपर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड है. ठीक है, आपका अकाउंट है, आपकी वही रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, बट मार्केट की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज अनलिमिटेड. यू कांट डील विद दैट. सो as I said, we are no tips provider. We have no recommendations to make. We don't have any particular software which give you random buy and sell signal, and no secret method. That's the reality. That's you need to understand first. And here is who I am. Myself, Dr. Rahul Tiwari. I have done my MPhil from BHU. I was the gold medalist in my batch. And I have done again my masters from Hannibal University, UK, and I did my PhD from Germany. And I have roughly around 20 years of policy experience. I am still working as a principal new scientist in Shell and Exxon. I am working as a consultant. And I work with all the oil majors like Shell, ExxonMobil, Chevron, Total in different parts of the world, mainly in the United States and Norway, UK, Russia. On the other hand, I'm also a financial advisor and a wealth planner, right? And I'm a professional trader in all the asset classes: equity, futures, options, commodities, forex, anything. And I have a couple of my friends who are working on big banks like JP Morgan, HSBC, and Morgan Stanley. So that's why with them, I know how they make money. They make a consistent amount of money every year, without anything. Whether there is a crash, whether there is a bull market, whether there is a bear market or sideways, doesn't matter to them. Remember in the sense of the crash of 2008, when people have lost all of their fortune, they have consistently still made more than 30%. Why? There must be a reason.
वो कुछ डिफरेंट करते हैं जो हम सब नहीं करते. That's what. And that's what we need to know. What they do. And if we know what they do, then we are with them. We are not going against them. Because अभी क्या है, आप लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं या करने जा रहे हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है आपके अगेंस्ट में कौन है. आप जो एक टीम पर ट्रेड करते हैं, आपके अगेंस्ट में जेपी मॉर्गन का पूरा फ्लोर होता है, जिसमें 1000 प्रोफेशनल ट्रेडर्स आर एक्टिंग अगेंस्ट. वो 1000 लोग आपसे पैसा लेने के लिए बैठे हुए हैं. कुछ भी करो आप, they will always take money from you, right? It's a battlefield. If you don't know who your opponents are, आप बाई सेल करते हो तो कोई दूसरा कुछ रिवर्स कर रहा है ना, तभी आपका ट्रेड होगा. ऐसा तो नहीं होगा. आप बाई कर रहे हो तो आपको सेल कौन कर रहा है, या आप सेल कर रहे हो आपको बाई कौन कर रहा है. उसका भी डिफरेंट होगा ना आपसे, और 90% लोगों का भी डिफरेंट होगा. That is why the difference. Because अगर आप इस एक बैटलफील्ड में हैं, आपको पता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए आपका अपोनेंट कौन है. अब वो अपोनेंट जो है वो क्या करता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना. उसके पास कौन कौन से वेपन्स हैं, वो किन वेपन्स का यूज करता है. आप अकेले बैटलफील्ड में आ गए, आपको ये नहीं पता आपका अपोनेंट कौन है, आप एक 303 राइफल लेके घूम रहे हो और उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, व्हाट यू गोना डू, राइट. तो एसेंशियली हमें ये जो वो करते हैं वो पता होना चाहिए, और वो स्किल सेट आने चाहिए जो वो करते हैं. और जिन लोगों को वो स्किल सेट और ये पता हो जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, दे कैन मेक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इन दिस मार्केट. इस मार्केट में अथाह पैसा है, दैट इज नो डाउट. बट उनके लिए है जो इस मार्केट से निकालना चाहते हैं, बाकी सब देने वाले. तो जो 90% लोग हैं ना, वो एक्चुअली डोनर है, वो 10% लोग हैं. और इसीलिए थिंक लॉजिकली, आप सोचो, कोई भी अपने डोनर को क्या एक राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देगा? नहीं. क्यों देगा? नहीं. बिकॉज आप गलतियां करो, डेफिनेटली करो, यही तो वो चाहते हैं. आप हर पल गलतियां करते रहो, हर चीज गलत करो, it doesn't make sense to you. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. You always know, आपका 4-5 लाख रुपए जो भी अकाउंट है वो साफ हो जाएगा, they'll get it. But you are not the only one, ना, आप अकेले नहीं हो. उनके पास इस तरह के लाखों करोड़ लोग हैं. That's how they make money. Anyways, अभी एक यूजुअल क्वेश्चन, because it's an introductory seminar है, आप लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं, बट स्टिल दिस इज फॉर द अवेयरनेस. सो एक नॉर्मल इंसान को भी पता होना चाहिए कि उसको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करनी है तो क्यों करनी है. पहली बात, नो प्रायर एक्सपीरियंस नीडेड. ठीक है. एज आई सेड, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. एवरीवन इज इक्वल हियर. यू कैन स्टार्ट विद वेरी स्मॉल मनी, check it, your risk and reward and manage. Very small time investment. आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए आप 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं. सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम या उस प्राइमरी सोर्स को इन्वेस्ट करने के लिए आप आधा घंटा दिन का नहीं निकालना चाहिए. बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी योर लॉन्ग टर्म वेल्थ. आप इसीलिए काम कर रहे हो. अभी इस मार्केट में लोग क्या है, एक जनरल परसेप्शन है, whenever you buy something and if it go high, then you sell, you make a profit. But on the other hand, what the smart guys do, they make money whether the price go up, they make money whether the price go down, they make money whether the price stays where it is. तीनों डायरेक्शन में if you have tools you can make money, then you will make money, of course. अब आप डायरेक्शनल होगे, आप एक ही डायरेक्शन में प्ले करोगे कि मैं सस्ता खरीदूंगा महंगा बेचूंगा, तो नहीं हो पाएगा. That's not gonna happen. You can trade from your home, आप अपने घर से कर सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो. और एक्चुअली इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज समथिंग अराउंड 15 to 20%. इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का, जितनी चीजें हर साल बढ़ रही है इस रेट से. आपके बैंक अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मिलता है. तो अभी अगर हम बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, ठीक है, तो वो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है,
1,00,000 रुपए रखा, कोई 1 साल बाद 1,07,000 रुपए मिला, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू इस टाइम क्या है 92,000 एज पर द इन्फ्लेशन। तो ये एक साइकोलॉजी लगता है कि हमारा पैसा सेफ है, हमारा पैसे को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, but that's you are actually declining your हाँ, सर जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेशन रेट 15-20%, बट ये जो डेटा हम लोग टीवी वगैरह पे देखते हैं वो तो काफी लोअर है। देखिए क्या है ना, ये जितने भी मैंने आपको इन्वर्जन नैरेटिव क्यों बताया, जो भी आप टीवी पे देखते हैं, आपने वो टीवी पे जो रेट आता है वो 8 से 10% आता है, ठीक है ना। आपको याद है 1 साल पहले दूध का प्राइस क्या था, राज क्या है, क्या चीज याद है? आप जो रोजमर्रा में चीजें यूज करते हैं उनका प्राइस 1 साल में कितना बढ़ा है, रियल प्राइस, रियल इन्फ्लेशन रेट। रियल इन्फ्लेशन रेट इंडिया का आई एम स्टिल ऑन अ स्मॉल फिगर, इट कुड बी मोर देन 20% फॉर सम एस्पेक्ट्स। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि सरकारी डेटा क्या है, जो हम डे टू डे में यूज कर रहे हैं वो चीजों का आप खुद से एनालाइज कर सकते हो ना, कि 1 साल पहले जो 100 रुपए था आज उसकी वैल्यू क्या है। That is give you a real inflation, right? That's what we need, right? हमें गवर्नमेंट डेटा पे थोड़ी ना करना है कि if we see that 20% and government is saying 8%, then 12% का difference गवर्नमेंट हमको देगी नहीं देगी, वो हमें आपको भी दे सकते हैं। So that's what you need to be realistic. Don't fall into that inversion narrative, which the other people wants you to know simply. Because I want the people here to become smart, independent, logical thinking, question everything, right? तभी आप अलग होगे ना लोगों से, नहीं तो बाकी सब वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, हम भी वही सोच रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। What is the difference? What is the point? आप लोग यहाँ सैटरडे को आज हो यहाँ पे, तो कोई पर्पस है ना आपका, आप अलग कुछ करना चाहते हो ना, अलग सोचना चाहते हो, and that's what actually just because of thinking and doing like this, you are actually depriving or getting away from that dumb population. At least आप उस population से निकल के उस तरफ जाने का सोच रहे हैं और eventually वहाँ पहुँचेंगे। लोग सोचते ही नहीं हैं, जाने की तो बात छोड़ दीजिए, आप सोचते ही नहीं है कि we should do something। अभी इसमें क्या है कि no retirement age है, आपको किसी पेंशन पे नहीं डिपेंड होना है, ना कोई रिटायरमेंट एज है। इवन इन योर 90s, आई नो, आई विल टेल यू द स्टोरीज ऑफ दैट। इवन इन योर 90s you can pay your hospital bill with just your mobile. Going for a cardiac transplant, wait, I'll just do few trades and I'll sponsor my cardiac operation. That's gonna happen if you're going onto that path. Simple. And this is just some general topics like what you can expect actually from our mentorships. 20 to 40% growth in your portfolio, 10% monthly income. You can, depend upon your investment style, you can do full-time, part-time, swing, intraday. Any of you trade derivative market? ऐसा नो करते हैं आप लोग? Future and options? अपने लिए नहीं तो Client के लिए. मतलब you know ना, but mostly people don't know actually how the money can be made. Well, it's not going to be in up direction; it's going to be in the down direction as well, right? And most money actually made in the down direction, first of all. And in this, you need to do a multiple time frame analysis. Multiple time frame analysis क्या है? Means you see some high time frames and then you see your execution time frames. The key is to minimize the risk and maximize the profits, right? Abhi nearly 80% people lose money in this market, right? So क्या है कि ये एक sadistic remark है, but it excites. Why? Who are the rest 20%? So अगर जो 20% कमाते हैं उनको 80% दे रहे हैं तो वो 20% बहुत कमाते हैं ना, नेचुरल सी बात। सो अभी देखिए क्या चेंज हुआ, एक ही स्टेटमेंट है बट उसके दो मीनिंग्स हैं। 80% पीपल लूज करते हैं और मुझे नहीं करना, बट थिंक ऑन 20% जो विन करते हैं, आई वांट टू बिकम दैट, आई वांट टू बी लाइक दैट, सिंपल ना।
So if I think like them, act like them, then I will be with them. And for those who do hard work and acquire the necessary skill set, which actually those 20% people are having, and they need to have a professional attitude. That is more important. Here in this market, if you come as a hobby, as a casual approach, or मेरा time नहीं कट रहा है, so I could do something, then don't do it. There are lot many other ways to get that kind of thing sorted in life, rather than losing money here in this market. It's a very serious business, and it needs the serious people, first of all. And what is the rule of wealth creation? It should be consistent in frequency, in an amount. आपको पैसा कमाना है, तो पहली बात तो एक्सपेक्टेशन जो है वो एक रियलिस्टिक होनी चाहिए कि मुझे से 5 से 10% अपनी कैपिटल का पर मंथ देना है. You should have a fixed goal. You shouldn't have a goal कि मुझे अपनी इनकम को डबल कर लेना है, ट्रिपल कर लेना है, या मुझे जैकपॉट पे चले जाना है, या मल्टी बैगर्स पे चले जाना है. These are myths. There's nothing like it. 10% or 5% is bigger rate in 1 month. You know, 5%, 10% पे आप अपनी इनकम कंपाउंड कर रहे हो ना. You can double your income in a year, right? It is a very great return. Absolutely, and that's very much possible. Very, very much possible. I'll show you with live examples what I'm talking about. Some of my friends want to do this like You know, we can discuss it afterwards. All those things, I'll give you the real-time examples, how that's possible. I'll just give you an example, like last Friday, I'm trading live in front of everyone, which nobody does in India, right? First time I have initiated this. And on last Friday, we do 40,000 out of a capital of 3 lakhs. My real trades are in Western markets, but for here, for Indian traders and investors, if this is the capability, if I can do it, so that anyone can be. They can see my trades, they can see the logic of my trades, they can see my profit loss statements, they can see my portfolio, how I am doing. So it's not like, just distributing gyan or recommendations. There are 2 things in this world, knowledge and the skill. Knowledge a person can get from a book or from a YouTube video, but skills, those can be acquired once you practice it on a real-time basis. You see your results and accordingly act. Modify them, rectify them, correct it, and again do it like that. I have an opportunity to work with all great traders in this world. John Bollinger, Daniel Craig, Pitt Sequels. I work with them as one-to-one, right? What they do, they are multi-billionaires. They are Arabpatiyon ke Arabpati. But you know what? What they do? They still work 18 hours. Right? That's why they become like that. That's why they become these great personalities. And here, we don't do anything and our money will grow. Not going to happen. If that's would be the case, then everybody is doing just the same. Nobody is working in anywhere. सब stock market भी कर रहे हो. सबके सब. क्या जरूरत है? कुछ नहीं कर रहे हैं ना? Kind of. And there is a concept. In any part of the world, it's a general. If you do anything, आप कुछ भी करो, if you have unlimited risk and unlimited profit potential, right? And if you do this multiple number of times, then only you win money, big money, right? और उसको कई बार करना होगा, एक बार में नहीं होगा. अभी वही example है the power of compounding. It is with an example of 1,000 rupees. 1,000 rupees, 5% के उसके अगर आप compound करते हो, which is approximately the rate of return of bank, 5% है. After 20 years, you have 3,390. और after 25 years, 3,390 रुपए की क्या वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से. सरकारी आंकड़े कुछ भी हो, 25 साल बाद 3,390 रुपए की क्या वैल्यू होगी? आई डोंट थिंक 3 रुपए से भी आज की कम होगी 25 साल बाद. बट अभी क्या है, अगर हम उसको ये 15 to 20% के रेशियो में कंपाउंड करें सिर्फ एक
we will get 95,400, 900% return. That is how the money can be made, right? सुनने में लगता है 5-10% कुछ नहीं, but 5-10% आप एक बार पहले उस गोल को तो अचीव करो consistently, उसके बाद fortune is yours. And a lot of money can be made in this market. I have made a lot of money in this market. I have made my fortunes in this market, and that's what I would like people to know. Because you know, I don't need to do all this stuff, but everyone's life has a purpose, and the purpose of my life is actually to give something socially to the people who are in need. I'm not working for those big guys. They have a lot of money. I'm here to work for the common people. They need me, not them. They have a force, right? And that's why I'm not interested in anybody's money. It's your money, it's your responsibility. I'll give you a path, I'll show you a torch, but you have to run on that path. Nobody else is gonna go instead of you. अभी क्या है, एक आदमी का needs and desires क्या होते हैं? Good relationship हो, peaceful mind हो, good health हो, positive energy हो, और financially independent हो. But अभी Indian scenarios ये है कि if you are financially independent, then you have all four. Then you will be stress-free actually. Otherwise, whatever be the person you are, in purity form, a very nice person, but if you are not financially independent, then you are just normal being. Nobody cares. But if you have finances with you, how bad a person you are, nobody cares. Right? This is the reality of our society here. And to be financially independent, you need to have a balance between your income, savings, and the expenses. Okay? That is very important. आपकी income क्या आ रही है, आपकी savings क्या हो रही है, और आपके expenses क्या हो रहे हैं. Financial laws के according कि आपका जो savings है वो ये नहीं होनी चाहिए जो expenses की बात बचती है. आपकी savings वो होनी चाहिए जो हम expenses को किस तरह कम कर सकते हैं, और savings expenses की जो list है उसको short करके savings में डाल सकते हैं. That is going to be your natural savings. In this there is a rule of 72. बहुत important concept है 72. हर कोई ये सोचता है कि उसकी मनी कब डबल हो जाए. 72 एक ऐसा है 72 कि आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो. से बैंक में से 8% है, ठीक है, हाँ, और 72 डिवाइडेड बाय, मतलब बैंक कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, आपको कोई प्रॉमिस करता है, सपोज मैं आपको 10% दूंगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट 72 डिवाइडेड बाय 10, 7.2 इयर्स में आपकी इनकम डबल होगी. ठीक है, बैंक में 9 इयर्स में होगी, उससे भी ज्यादा लगेगा अप्रोक्सीमेटली. अभी क्या है, we talk about Mr. Sachin Tendulkar, how great he is. He is a lord of cricket and everything. But we forget to mention last 20 years before he became selected in Indian team or anywhere else, what struggle he has done for the past 20 years. बस 20 साल उन्होंने मेहनत करी है. That's why he became the Sachin Tendulkar. और ये मैं जो ट्रेडर्स की बात कर रहा था, they have the same philosophy. उन्होंने इतनी मेहनत करी है मार्केट में, that's why they are so great, that they are a milestone in this financial, but basically in the stock market and regarded everywhere. अभी इसके लिए important क्या है, जो first ingredient है, that I always focus on the people you need to become independent. आप अपने मन में सोच के बैठो कि मैं भले कुछ नहीं करूँ, even if I invest 1,000 rupees, I'll do with my own sense. With my own sense means whatever I understand about. I won't go with anybody's advice or recommendation or tips. And for that, आपको responsibility अपने shoulders पे ही लेनी पड़ेगी. जब आप अपने shoulders पे responsibility ले लेंगे, तो हो जाएगा. और दूसरा, there is no shortcut. पहली बात.